Well, so we are starting off with moving charges and magnetic field numericals. Question number 3. Follow. Question number 3 টা কি যে করেছে কি করে করেছে বলো দেখি আমায়। An electron emitted by a heated cathode and accelerated through a potential difference of 2 kilovolt enters a region with magnetic field 0.15 Tesla. Determine the trajectory of the electron if the field is transverse to the velocity. What do you mean by transverse to the velocity? Transverse to the velocity মানে কি? সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার। তাহলে ভেলোসিটির সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার একটা চার্জ পার্টিকেল থ্রো করলে সেটা কোন দিকে মুভ করে? আমরা তিনটে কেস করেছিলাম। কি কি কেস করেছিলাম? যখন চার্জ পার্টিকেলটা প্যারালাল টু দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড থ্রো করা হয়, it does not experience any force. যখন পারপেন্ডিকুলার থ্রো করা হয় তখন কোন দিকে মুভ করে ওটা? it takes up a circular path. ঠিক আছে? তাহলে এখানে ট্র্যাজেক্টরিটা সার্কুলার পাথ। তাহলে সার্কুলার পাথ যদি হয় তার রেডিয়াসটা কি করে বার করি আমরা? ফর্মুলাটা কি? r রেডিয়াসটা r is equal to mv by qb. ঠিক আছে? So the first part, whenever you throw a charged particle perpendicular to magnetic field, কিভাবে থ্রো করা হচ্ছে আসিকা? Perpendicular to what? To a magnetic field. Magnetic field যেদিকে আছে তার রেসপেক্টে যদি আমরা পারপেন্ডিকুলার থ্রো করি তাহলে চার্জ পার্টিকেলটা কি ট্র্যাজেক্টরি নেয়? সার্কুলার পাথ। ঠিক আছে? So if it goes circular তাহলে আগে লিখো it will take up a circular path. So what will be the radius of the circular path? সেটা আমরা বার করব। Where radius r is equal to mv by now see you know that mass of an electron is 9.9 right? It's given, right? आगे नंबर है जो सम नंबर 1 है 9.1 into 10 to the minus 31 kg and charge is e, that is 1.6 into 10 to the minus 9, right? So we also know the magnetic field which is v equal to 0.15 Tesla. What we don't know is what velocity. तो वो कैसे निकालें? कैसे फाइंड करें? So whenever a charged particle is accelerated across a potential difference, ठीक है? This is a very important concept. এটা অনেক জায়গায় কাজে লাগে, ঠিক আছে? এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। Charge accelerated across potential difference V has a kinetic energy given by half m v square a beta velocity is equal to q into the potential difference q into potential difference. Yes, তাহলে এই ভেলোসিটিটা কি করে বার করব? therefore velocity v is equal to 2qv by m square root of 2qv by m. ठीक है? ये क्या होगा? ये वेलोसिटी होगी। तो फिर रेडियस कैसे निकालेंगे? r is equal to m by qv into v है पावर ऑफ 2qv by m और यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है हम लोग को कितना? 2 किलोवोल्ट। किलोवोल्ट का मतलब क्या है? Right? So you can put back the values and get your answer, yes or no? Yes. Done? सलोनी सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर हम लोग वो ट्रांसवर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं छोड़ के at an angle of 30 degree फेंकते हैं, if I throw it at an angle of 30 degree, तब भी क्या सर्कुलर पाथ नहीं घूमेगा? क्या है? पाथ कैसा होगा? तब भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा क्या? सो ना पाथ क्या होगा?
if it is thrown at a certain angle theta, তাহলে পাথটা কেমন হবে? কি হয়? At an angle যখন থ্রো করা হয়, when you have magnetic field along a direction and the charged particle is thrown at a certain angle, একটা অ্যাঙ্গেলে যদি থ্রো করা হয় তাহলে এইটা চার্জ পার্টিকেলের দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, মানে ভেলোসিটি দুটো কম্পোনেন্ট থাকে, v cos থিটা আর v sin থিটা। v cos থিটার জন্য ও সামনের দিকে যেতে চায় and v sin থিটার জন্য it moves in circular path. So it will move in a circular path as well as move in the forward direction. So that is what we call a helix. এই পাথটাকে আমরা কি বলি? Helix. So you need to say that part B, it will take up a helical path. It will take up a helical path. Okay? So if it takes up a helical path, what will be the radius of the helical path? We have done r is equal to mv sin theta by v. So the same thing will be applied since यहाँ पर theta दिया हुआ है extra data. Theta का value कितना दिया हुआ है? 30. So you have to put the value of sin 30 degree. Sin theta 30 degree. ठीक है सर? लिखा हुआ है सर? Right. So you put back the value and what is the answer? Whatever the answer is coming out. ये वाला value. अच्छा और ये वाला कितना है? वो वाला 1 मिलीमीटर था। तो ये तो 0.5 मिलीमीटर आना चाहिए। अगर ये 1 मिलीमीटर आएगा तो ये should be 0.5 मिलीमीटर। You understand why? Because सब कुछ सेम था। सिर्फ यहाँ पर क्या बना? sin 30 degree is half. तो value put कर ले, it will come out to be 0.5 millimeter. हो जाए सर? Is that clear? All right. Next question. Question number 4. लिख लिया ये? Everybody do your own calculation and see what answer you are getting. Answer match question Well, question number 4 says a beam of proton with a velocity of this much enters a uniform magnetic field at an angle 60 degree to the magnetic field. Find the radius of the helical path taken by the proton. Also find the pitch of the helix. At your को you get a pitch का extras. So the radius होता है कि mb by qb, right? So m is given over here proton. You know mass of proton is 1.67 into minus 27 kg. It is not called like what? Write it down quickly. 4 into 10 to the power 5 meter per second. Radius का होता है पार्टिकल का where magnetic field is 0.3 Tesla and theta is equal to 60 degree. Clear? And obviously Q होता है E होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Alright? So for data available আছে the put back model we can be able to solve it. Very good. R কত বেরিয়েছে? 1.93 তো কত বেরিয়েছে? 0.01 minus 3 তারপর 0.012 meter 0.012 meter হ্যাঁ তার টোটাল ঠিক আছে 11 পয়েন্ট কত এসেছে into
10 to the power minus 3. It's near about same valence. These are the values given. Put back করে যদি একটা ঠিকঠাক ভ্যালু না বার করা যায় তাহলে আর অঙ্ক করার দরকার নেই, ঠিক আছে? পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান বা আলুর চপের দোকান বিক্রি করছে, এখন চপের কাজ খুব ভালো চলছে। হ্যাঁ কত বেরোচ্ছে সেটা বাদ করো, ঠিক আছে? নেক্সট পার্টটা হচ্ছে পিচ। Next part কি বলছে? Pitch. So how do you find out pitch of a helix? 2 pi m কত কত m b cos theta b cos theta by wow. So we can put back the values and get the answer. What are the next step? What is it? 0.043. अच्छा, इससे देखते ही पाए। ये क्वेश्चन सर, बड़े को लिखते हैं तो पिक्स। हाँ? पीछे भरने कत আসছে? দেখি আমি তো ক্যালকুলেট করে দেখিনি, ওরা ক্যালকুলেট করেছে। এখানে ভ্যালুগুলো সব করে দেওয়া আছে, এটা পুট করবে, পুট করে ক্যালকুলেট করবে। লেখা আছে তাড়াতাড়ি ফাস্ট লেখা হয়ে গেছে। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इजी। बता दीजिए। हां Question number 5 पे किया है a cyclotron oscillator frequency of 110 megahertz frequency কত দেওয়া আছে 10 megahertz 10 megahertz megahertz means 10 to the power 6 hertz 10 to the power 6 hertz megahertz মানে 10 to the power 6 hertz what should be the operating magnetic field for accelerating protons মানে magnetic field আমরা বার করতে বলছি if the radius of the D's is 60 centimeters so what do you understand by this radius of the D's remember the cyclotron আমরা পড়েছিলাম it is made up of 2 D's right the magnetic field lines are crossed or dot whatever it can be cross or dot whatever doesn't matter and there is an oscillator connected to its two ends right so this is how what looks like cyclotron. Now in this cyclotron they are saying the magnetic field they are asking you to find out the value of the magnetic field. They are giving the radius of the D's is how much? D's is equal to 60 centimeter. And they are also asking you to find out the kinetic energy of proton being produced. So first tell me, how do you find out the value of D? कैसे निकालेंगे? Frequency, right? F equal to QB by ये पढ़ेছিলাম আমরা ক্লাসে right तो हम लोग टाइम पीरियड किए right time period किए for a circular when a charge particle is moving in a circle তখন আমরা time period টা কত বার করেছিলাম 2 pi m by qb so you know if time period is this frequency can be written as 1 by that is qb by 2 pi m अब यहाँ पर frequency मुझे मालूम है charge proton so it will have the same charge as electron 1.6 into 10 to the power minus 19 और मास भी यहाँ पर दिया हुआ है प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg right so all values are known to us we'll put back the values and get the value of b is equal to alpha और नहीं समझना है ये कर पाओगे आर्थिका 2 pi mm by q ठीक है सर
আজ রাত্রের মধ্যে বা কালকে সকালের মধ্যে এটা কমপ্লিট করে নেবে, ফেলে রাখবে না, কারণ এটা পড়ে থাকলে আর জীবনে কোনোদিন হবে না। বুঝে গেছে? একটু বললাম স্যার পরীক্ষা আসছে না, তাই তো আসছে না, আমি জানি, সেই জন্য আমি বললাম, নাহলে বলতাম নাহলে থাকতো অসুবিধা নেই, যখন পরীক্ষা হবে তখন আমার খোলা যাবে। এখন যদি করে নাও একবার, তাহলে যখন খুলবে আবার পরীক্ষার সময় তখন দেখবে সেটা মনে থাকবে, নাহলে মনে থাকবে না, সব কটা ভুলে যাবে। ইজ ইট ডান? হয়ে গেছে এটা সবার? হ্যাঁ না না? They want you to find out the kinetic energy of the proton being produced in the accelerator. Is it possible for us to find out the kinetic energy of the proton being produced? কি করে বার করব? বলো। Right, since the radius is known to us, এই রেডিয়াসটাকে আমরা ইউজ করব, রেডিয়াস অফ these টাকে আমরা ইউজ করব to find out the kinetic energy of the particles. কি করে? আমরা জানি r is equal to mv by uv, right? So we can write v is equal to কি করতে পারবো আমরা? qvr by m. তাহলে kinetic energy কি হবে? half a into u square v square r square by m square. So you can cancel off 1m and write it as q square v square r square. This is a standard formula. ঠিক আছে? এটা শুধু আমার লেখানো হয়নি, বাট আমার মনে হয় অ্যাসাইনমেন্টে আছে এটা। The kinetic energy of the charged particle when it is coming out from a what cyclotron. ঠিক আছে? লিখে নাও। For an accelerated particle out of cyclotron. So whenever they ask you to find out the kinetic energy of a charged particle coming out of cyclotron, you can use this formula directly formula use করা যাবে to find out the kinetic energy. Done? You can put back the values and get your answer, right? Yes or no? Okay, let's go for the next question. Question number 6. See, question number 6 is a very easy and direct sum. It says that a test charge is moving with a velocity of 2I plus 3j meter per second in a magnetic field V equal to I minus 2j Tesla. Find the force acting on the test charge. Q টা কত হবে? No. Test charge is always taken as unit positive. মানে আমরা ইলেকট্রনের চার্জ নেব না, তাহলে আমরা বলে দিতে হচ্ছে ইলেকট্রন বা প্রোটন এটা বলে। Since it's a test charge, take the value of Q as 1 coulomb. This is not a practically feasible value, but theoretically we take the value of test charge as 1 coulomb. Okay? So now you know the force experience is given by F equal to QV cross V, right? So that is 1 into 2I plus 3j cross V, that is I minus. So you need to do the cross product, and remember whenever you are doing the cross product, try to use the determinant method. I, J, K. First comes the V. Remember the order is important in cross product. Order is very important. Correct? 2, 3, 0, and this will be 1. Right. So the force F is equal to this because the value of charge is 1. So ये क्या आ जाएगा? I 3 into 0, ये into 0, 0 minus J के लिए ये क्लोज करेंगे, वो भी 0 होगा। और K क्या के लिए सिर्फ आएगा -7 आएगा, तो minus 2 to the 4 minus 3
that is minus 7 k cap. Simply minus 7 k cap. नहीं आंसर ऐसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं, क्योंकि ये ij के में दिया हुआ है ना सम्स, वेलोसिटी भी i के टर्म्स में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो नहीं बोला है ना, फाइंड द फोर्स बोला है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोलते हैं तब हम लोग बोलते हैं 7 न्यूटन। Since they are given force, you need to write it as minus 7k as this. Alright? Alright. Question number 7 is the next question. It avega se? Question number 7 is the next question. Seven is very interesting question. Let's quickly do this. 7 is a very interesting question. Let's quickly do this. Ki boleche तुम्हारे देखो 7 का. It says an electron has an initial velocity of 2j plus 15k kilometer per second at a constant acceleration of 2 into 10 to the power 12 I in a region in which uniform electric as well as magnetic field are present. If B is equal to 400 I cap micro Tesla, find the electric field. B देवा से ये बात करते बोले से electric field. So we know when both electric and magnetic field is present, what do you write the equation of force acting on a charged particle? Since this is a sum where I cap, J cap are mentioned, this is actually very easy. You just need to put the value and get your answer. Value put answer. Look at this. It's a electron, right? It is experiencing a force. So we need to write the expression force which we can substitute as, right? Can we do that? Now let's put up the values and see what we get. Mass of an electron is 9.1 into 10 to the power, and the acceleration over here is mentioned to be 2 into 10 to the power 12 I cap. Okay? Next, Q. Q is 1.6 into 10 to the power plus 1.6 into 10 to the power minus 19 into, what about V? Is 12 I cap plus 15k cap kilometer per second. Be very careful about the units. 12 j cap, right? 12 j cap plus 15k cap. Done. Finally, cross product with velocity. Sorry, magnetic field, which is 400 into 10 to the power minus 6. Why? Because it's given micro Tesla. Okay. Be very careful about the units. Alright, micro Tesla दिया हुआ है. So convert everything into SI. SI के नाम हमने किंतु हमको बोला जाएगा. Even you have to solve for what? ये जो solve. ठीक है? So first we go for a little general calculations like over here 10 to the power 3. 10 to the power minus 6 is 10 to the power minus 3 and this will be 0.4, right? So 0.4 can be multiplied with this and don't multiply the 10 to the power minus 9 because you can take it common from both of them and divide it over here. So वो पहले कर लेते हैं हम लोग. That is 9.1 into 10 to the power minus 31 into 2. Well, so what I did over here is I brought 1.6 into 10 to the power minus 19. I could take common from both of them and bring it over the left or on the right hand side and left with this expression. So यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, बी वेरी केयरफुल, ये कैलकुलेशन में मत डाल देना, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. So this will be how much? इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा?
C 10 to the power minus 19 और इधर जाएगा तो ये भी 31 31 कैंसिल्स राइट 11 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 11.37 कितना है अच्छा 11.37 I cap is equal to E plus अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करो जल्दी से तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा J क्रॉस I कितना आता है J क्रॉस I 0 आता है पकड़ के गुस्सा मारेंगे J cross I is minus K, right? So it will be minus 4.8 K. J cross I is minus K. Therefore, K cross I is K cross I is J actually. K cross I is J. ताले K cross I J ले plus So when you bring everything on the left, 11.37 by clockwise minus clockwise minus. Is that clear? What is it? Yes, sir. So all you need to do is the regular calculations. যেটা আমরা একদমই করি না বলে আমাদের হয় so जो value গুলো put করে we have to stick to the basic rule and put the values and calculate it accordingly তাহলে হয় এবার বোঝা যাচ্ছে next question number 8 अच्छा question number 8 is based on what E force का T force वाला है remember this is Lorentz force right so in the next question they have said that an electric field and a perpendicular magnetic field act on a moving electron to produce what do you call this effect Hall effect. So when the Lorentz force becomes 0, you call it Hall effect. Don't you know Hall effect? Yes. John, question number 7 है Lorentz force लिखे नीचे सवाल. लिखे ना John लिखे ना question number 7 है Lorentz force. Lorentz force लिखा है सर. Question number 8 is a sum on Hall effect. Why? Because it is saying that there is a crossed electric and magnetic field, but there is no net force experienced. Hall effect is a direct formula. V is equal to E by B. So if it is Hall effect, you can put the value directly or nikal. So V is equal to E by B. Electric field is 1.5 into 10 to the power 3 because kilovolt per meter दिया हुआ है. और magnetic field is 0.4 and the answer you'll get obviously is in SI system meter per second. ठीक है सर 12.5 into कुछ आना चाहिए ना सर मेरा 3.75 into 10 to the power 3 ठीक से एप्लीकेशन करो वैलिडिटी 1.5 into 10 to the power 3 होगा इस गेम में. Next question number 9 says an electron is accelerated from rest by a potential difference atto enters a magnetic field of magnitude this much Tesla with a velocity perpendicular to field. Calculate the speed of the electron and the radius of its path in the magnetic field. Question number 9 is exactly same as question number 3. Question number 9 is exactly same as question number 3. ठीक है सर try it yourself. Question number 9 is exactly same as question number 3. Question number 9 same as question number 3. Try it yourself. ठीक है सर number 10. Question number 10 says Question number 10. It
it says a 10-gram bullet having a charge of 4 microcoulomb is fired at a speed of 270 meters per second in a horizontal direction. A vertical magnetic field of 5 into 500 microtesla exists in the space. Mane, the bullet has been thrown horizontally and the magnetic field lines are present in the vertical direction in the space. Find the deflection of the bullet due to the magnetic field as it travels through 100 meters. Make appropriate approximations. So, say the magnetic field is perpendicular to this, right? Vertical direction. Our charge particle के कोई थोड़ा लगा है horizontal. ताले limits left hand rule की बोल से FBI horizontally charge particle throw करा है magnetic field vertical direction. ताले either it will come out of the plane of the board or it will go into the plane of the board. ठीक है? Not necessarily magnetic field का direction vertical बोला हुआ है. Upwards या downwards mention किया हुआ है क्या? Mention नहीं किया हुआ है. So यहाँ पर सिर्फ इतना ही visualize हम लोगों को करना है. It can be inwards or outwards. Deflection can take place inwards or outwards. Now, what we need to understand from here is that the force, how much force it will experience, and from there we have to go back to the motion in two dimensions. Kinetics. Can deflection change होना है? Okay, motion in two dimensions. Alright? So the motion in two dimensions আমরা কি শিখেছি? যে in one direction, যে direction এ কোনো force act করছে না, in that direction it will move straight. ঠিক আছে? So we'll consider the motion to be like this. Right? The deflection taking place. Say we are viewing it from the top view. Top view যদি আমি consider করি, তাহলে magnetic field lines are either cross or dot on a top view. So vertical magnetic fields are like this, and the bullet has been thrown perpendicularly, right? The bullet has been thrown into this perpendicularly with a certain velocity. So it will get deflected like this. But what do you force experience for it? And you get deflected like this. So question is, this range, the field travels through a field which is up to 100 meters. So a deflection from its central direction, alright? Obviously motion in two dimensions consider. So first thing you need to find out is the force. সেখান থেকে আমরা acceleration বার করব, তারপরে x axis y axis calculations. Alright? So therefore force experienced is F equal to QB B sin theta, right? And see, it has been thrown perpendicular exactly because magnetic field and charge particle motion is perpendicular. Then what will be the value of Q? Charge value kata hobe 4 microcoulomb, 4 into 10 to the power minus 6. B is 270. B is 500 into 10 to the power minus 6, right? Alright, sin theta is sin 90. So you'll get a certain value of force. Therefore, acceleration कितना होगा? Alright. So this force divided by mass, which is given 10 grams. So 4 into 10 to the power. 10 to the power का action में नहीं से. Can you make a little calculation over here? Podcast को बोल रहे हैं. Minus 12. Minus 10 minus 9 minus 8 5.4 into 10 to the power minus 7 divided by mass is 10 grams. So 10 into 10 to the power minus 3 because you need to convert it into kg. Here.
আসবে তাই তো আচ্ছা এই উপরের ক্যালকুলেশনটা কি ঠিক করেছ এখানে 6 আছে এখানে দুটো গেল আর এখানে তিনটে আর 5 আর 20 আরেকটা যাবে চারটে পাঁচটা হ্যাঁ রাইট 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 এক্স্যাক্ট দ্যাটস ইট তাহলে এবারে কথাটা হচ্ছে যে অ্যাক্সিলারেশন ইজ 5.4 * 10⁻⁵ মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এটা এলো এবারে আমরা কি করব উইল অ্যাপ্লাই দ্য কনসেপ্ট অফ টু ডাইমেনশনাল মোশন এই অ্যাক্সিলারেশনটা কোন দিকে আসছে along this direction that's why it is reflecting ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা x axis y axis মোশন কনসিডার করছি আমরা ধরছি এটা x axis আর এটা y axis so along x axis velocity along x axis কত দেওয়া আছে আমাদের 270 y আমরা এদিকে ছিল বলেছি তো তাহলে velocity along x axis is 270 মিটার পার সেকেন্ড আর distance traveled along x axis কত 100 meters তাহলে what is the time taken for this motion এই মোশনটার জন্য টাইম টেকেন কত হবে distance by speed this much seconds and along y axis এ কি হয়েছে y axis এ it is an accelerated motion so we just want to find out y axis এর displacement কত হয়েছে এইটা হচ্ছে displacement along the y axis তাহলে accelerated motion এর জন্য আমরা কি ফর্মুলা ইউজ করি ut plus magnetism তাহলে u টা 0 along the vertical direction uy is তাহলে half a b square তাহলে half into acceleration is 5.4 into 10 to the power minus 5 into b square is y 270 volts this much তাহলে this is the amount of deflection we will find this is the amount of deflection we will find is that clear done question number 11 में जाओ जब तक आंसर भी लोग निकालना अभी टाइम स्पेंड का जरूरत नहीं है जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं आंसर्स बाद में कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं see last class আমি তোমাদের এই কোশ্চেনটা করেছিলাম ক্লাসে এসে আমি ফার্স্ট এই কোশ্চেনটা করেছিলাম যে charged particle is thrown towards a direction and you need to stop it from hitting the wall তাহলে কি করতে হবে you have to create a magnetic field so that it can deflect the charged particle ঠিক আছে তাহলে এখানে এটাই দেওয়া আছে question number 11 look at this question number 11 কি বলেছে তোমরা সবাই it says a beam of electron whose kinetic energy is k emerges from a thin foil window at the end of an accelerated tube a metal plate at a distance d from the window is perpendicular to the direction of emerging beam so that we can prevent the beam from hitting the plate if we apply a magnetic field such that greater than this expression where m and e are the mass of electron and charge of electron so they just want you to find out what is the direction of b and direction that you always have so see this is the direction along which the electron is being projected this is the wall metal plate and the distance between this is d and they have given that the path of electron is like this so just if it needs to miss this remember our last class question key if it needs to miss this target without hitting if it needs to go round then the radius of this circular motion because this will make a circular motion right a charged particle should make a circular motion the radius of this circle should be less than equal to d d এর থেকে বড় হয়ে গেলে কি হবে ওটা d থেকে হিট করবে বুঝাতে তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হবে কি কোশ্চেন নাম্বার 11 to prevent the beam from hitting the plate r should be less than equal to d
right? R should be less than equal to D, তাহলে ওটা হিট করবে না, মিস করে যাবে, রাইট? R যদি গ্রেটার হয়ে যায় তাহলে it will hit. अब मुझे बताओ R का फॉर्मूला क्या था? रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल R equal to mv by qb. q টা হচ্ছে এখানে e চার্জ অন ইলেকট্রন, so we write it eb is less than equal to d, right? তাই তো এখানে আমাদের কি বার করতে বলেছে? শো দ্যাট দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড বার করতে বলেছে, ঠিক আছে? এবারে রিমেম্বার হাউ ডু উই ফাইন্ড আউট the velocity, because over here they have given the kinetic energy. So remember kinetic energy is equal to half m v square. So 2k by m is v square. v square is 2k by m, but আমাদের v square চাই না, আমরা কি চাই? বলে v হচ্ছে root over of root over of 2k by m. তাহলে আমি কি করছি? আমার চাই m ইনটু, এটা বসাবো কিন্তু তার আগে আমরা এটা সিম্পলিফাই করে নিই। আমার তো b চাই, তাহলে b টাকে ওরিয়েন্ট করে নেওয়া যাক। if I bring the b on this side and d over here, I get what? mv by eb less than equal to less than equal to মানে b should be greater than equal to mv by eb. তাহলে b should be greater than equal to কত হবে? m into v is what? So root over of 2k by m denominator e or d থাকবে, right? So you can just bring them, pull them into the inside the what? Root, and you get the expression. See, if you bring them inside the root, it will be root over of m square 2k by e square b square into m. So you can cancel out 1m and it becomes root over of the expression which is here twice ma by e square b square. That's the math. बुझा? कौन सा? ये वाला क्या हो गया? ये वाला, अरे यार बाहर था ये नंबर, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लाए, तो बाहर अगर m है तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वो m स्क्वायर हो जाएगा ना, पिंटा बॉन्ड हो जाएगा। Now the most important part, second part. This is the first part. How should this b be directed? b का direction कौन सा होना चाहिए? Just look at the initial instant and you'll be able to answer it. At the initial instant, what was the direction of velocity? This, right? So remember Fleming's left hand rule, FBI. I is the direction of charge particle, motion of charge particle. This direction, and is experiencing force along which direction? तो मतलब B किधर होना चाहिए? Inwards. But this is a negative charge. You know, electron is negatively charged. तो मैंने क्या कहा था कि सारा डायरेक्शन सेंस बना लेने के बाद तुमको चार्ज का नेचर देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो तुम जो डायरेक्शन निकाला है उसी को ही देखना, ठीक है? सिर्फ नेगेटिव के लिए उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट करना, बस और कुछ नहीं, ठीक है? सो द डायरेक्शन विल बी राइट आउटवर्ड्स। चार्ज पार्टिकल को जो मैंने शो किया था इस डायरेक्शन में, माने ऑब्वियसली এটা নয়, মানে ইউ ডোন্ট নিড টু রোটেট দিস ডাইরেকশন, এই ডাইরেকশনে রোটেট করতে হবে। আমরা আগে ডাইরেকশনকে জাস্টিফাই করব এটি। The direction will be inwards for a positively charged particle. So for a negatively charged particle, it will be just opposite. That is outwards. Okay. So the magnetic field should be directed outwards. Outwards from plane of the paper. What's it like now? Should be directed outwards. Alright? Question number 12 तक आया है, होएगा सेटा मुझको हमें?
क्वेश्चन नंबर 12 बोला ऐसा है, a particle of mass m and positive charge q moving with a uniform velocity u enters a magnetic field b at an angle theta shown in figure. So there's a diagram which is showing a cross magnetic field and a charged particle is entering the magnetic field at an angle theta. Okay? At an angle theta, charge q, mass m, velocity u, everything is given. Find the radius of the circular arc it describes in the magnetic field. पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ पर magnetic field और velocity का direction perpendicular to each other है या नहीं? क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है या नहीं? नहीं, सब लोग नहीं बोलते। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? और चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? बोर्ड का प्लेन में मूव कर रहा है ना? सो इस बोर्ड का प्लेन में कुछ भी रहेगा उसके साथ ये परपेंडिकुलर ही होगा ना? ये बोर्ड का प्लेन में कुछ भी रहेगा उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही रहेगा, राइट? अब क्वेश्चन है कि किधर जाए, हाउ लेट मूव। लेकिन सेक्टर टूल लगा लो, एफ बी आई, तो बी यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है? इनवर्ड्स, और चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया। सो द थंब पॉइंट्स ऑन दिस डायरेक्शन, दैट मींस इट शुड एक्सपीरियंस एट दिस पॉइंट, इट शुड एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? सो ये क्या करेगा? ऑब्वियसली अंदर जाएगा, लेकिन एक सर्कुलर पाथ बना के वो फिर से ऑब्वियसली भी करने की कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ऑन द प्लेस, वो फिर से यहां से क्या होगा? बाहर आएगा। Do you understand this? It will experience a force along this direction, so obviously it will deflect towards the left, and deflect करके यहां से यहां तक जो पाथ है ना, it will be perfectly a circular arc. ये आर्क बना के फिर यहाँ से वो निकल जाए। ओके, अब क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इट डिस्क्राइब्स। सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क को निकाल सकते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला है? जल्दी से बताओ। r is equal to mv by q b over 2 राइट, r equal to mv by q, 2 क्या करते हैं? क्यों हाफ क्यों होगा? अरे रेडियस निकालने बोल रहे हैं ना, तो r radius is r equal to mv by q, because that's it. ठीक है, radius of the r. सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या बोला है? Find the angle subtended by the arc at the center. मतलब ये सेंटर पे, सेंटर मतलब ये एक सर्कुलर आर्क है ना, तो ऑब्वियसली इसका एक सेंटर होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो f का डायरेक्शन बनाया है ये टुवर्ड्स द सेंटर ही डायरेक्टेड होगा। यू नो व्हाई? दिस फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? It is circular motion that you force to experience for it is a centripetal force, it should be directed towards the center. तो ये एंगल कितना होगा ये पूछा है, how much is this angle? हाँ बोलो, आर के लेंस की कोई बात नहीं, उसमें जाना नहीं करना चाहिए। अरे जियोमेट्री यूज करो, এখানে থিটা দেওয়া আছে এটা, এটা থিটা দেওয়া আছে, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা obviously, रेडियस 90 डिग्री माइनस थीटा হয়, আমি এখান থেকে যদি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস, তাহলে পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? ইনটু 2 থিটা, বোঝা গেছে? এক্স্যাক্টলি। তাহলে যে ডায়াগ্রামটা ড্র করলাম, একটু ড্র করে নিয়ে লিখো অ্যাঙ্গেল subtended is equal to 2 into 90 degree minus 3, that is 180 degree minus 235. Angle subtended by the arc, okay? By the arc. इसके बाद क्या होता है?
इसके बाद बोला है how long does the particle stay inside the magnetic field? How long does the particle stay inside the magnetic field? हाँ तो हाफ कर देंगे कैसे तो हाफ कैसे ये हाफ है ये तुमको देख के लग रहा है कि ये एक सेमी सर्कल है फिर कैसे भी कुछ भी हाफ बोल तो हो जाएगा आंसर so you can just use the unitary method simply कैसे हम लोग को मालूम है कि पूरा सर्कल घूमने में टाइम कितना लगाता है वो बोलो what is the time period formula for time period 2 pi टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 pi by qb वो कितना डिग्री घूमने के लिए लगता है 360 राइट तो 360 डिग्री के लिए इतना टाइम लगता है तो 1 डिग्री घूमने के लिए इट विल टेक 2 pi m by qb डिनोमिनेटर में 360 राइट सो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा m by 180 डिग्री माइनस 2 थीटा by समझ में आया और अगर यही चीज रेडियंस में हम लोग कैलकुलेट करें इन रेडियंस तो ये हो जाएगा 2 pi m into 2 pi minus pi minus 2 theta by qb into 2 pi. So you can cancel out 2 pi and the answer will be m into pi minus 2 theta by qb. Clear? बुझे ऐसे नहीं पूरा वैसे लास्ट पार्ट आल्टरी का उसके वजह से बोलो समझना second the next part of the sum এটা আসছে বলবা next part of the sum কি বলেছে হ্যাঁ so এই যে চার্জ পার্টিকেলটা থ্রো করা হয়েছিল এই ডাইরেকশনে এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে বলো এটা পজিটিভ ছিল বলে এদিকে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করেছিল নেগেটিভ হলে কি হবে এক্স্যাক্টলি অপোজিট ডাইরেকশনে ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে মানে এটা এদিকে না গিয়ে কি করবে এদিকে is that clear so let's quickly see what will happen over here একটা নতুন ডায়াগ্রাম বানিয়ে নাও ছাত্র না so the charge particle has been shown at an angle of what theta with the vertex when it is negative minus q it experiences a force along this direction you understand why यदि ये कारण एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं तो it's different to FBI so B is this inwards and charge particle is thrown along this direction so it should experience a force along this direction if it is a positive charge since it's a negative charge it will experience a force exactly in the opposite direction so it will take up a circular arc the circle is pretty poor okay so it will be finally thrown off along this direction a direction is thrown off alright so you need to find out the center of the ball is center in the center a little smaller. It's better. So, edge is centered, also directed towards the center, force directed towards the center of it, and finally it will get thrown away on this direction. If the first part of the radius, it will remain the same. Radius will not change because radius does not depend upon the sign of the charge. Radius will remain the same. Angles of delta change forever.
we need to change. কত হবে angle centimeter equal বার করব কি 4/2 বার করতে হবে angle centimeter কত হবে see if this angle is theta then you know this is the কোনটা মাইনাস করব 360 থেকে 180 minus 2 theta subtract করলে হয়ে যাবে রাইট now see এটা আমি যদি এখানে একটুখানি দেখতে চাই যে এটা কি করে বের হচ্ছে খুব সিম্পল সেটা হচ্ছে we can draw a perpendicular from here if this is theta then of course this angle is right angle এটা right angle বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে 90 this angle will be 90 degree minus theta so if this angle is 90 degree minus theta then this angle will be also 90 degree minus theta ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গেলটা 90 degree minus theta হবে अरे यार ये 90 डिग्री है ना ये पूरा एंगल 180 है हाँ तो 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करने से कितना बचेगा 90 तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आया समझ में তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা obviously এদিকের অ্যাঙ্গেলটাও 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে পুরো অ্যাঙ্গেলটা 360 ডিগ্রি 360 ডিগ্রি থেকে আমি কি করব মাইনাস 180 ডিগ্রি মাইনাস that is 180 degree plus 2 yes and the radians लिखते हैं it is 5 plus 2 alright so our time period কতক্ষণ লিখেছে it is exactly the same তো এখানে কি হবে 180 degree plus 2 theta হবে and this will be radians से 5 plus 2 ठीक है सर ये शॉर्टकट बनेगा पूरा It says a particle of mass, question number 13. It says a particle of mass m and charge q is projected in a region perpendicular